So hello students, welcome to EduTap and welcome to this video. Today we are going to talk about a very basic thing, that being the pattern for NABARD examination. I know it is very basic and anybody and everybody preparing for any examination should know the pattern. No matter कौन सा exam है, अगर prepare कर रहे हो तो pattern पता करना ही होता है. So coming to the pattern for NABARD examination, so why we are discussing this today? See, if you know the pattern, in one line let me just tell you, ये बताएगा if you are able to crack the exam or not, why and how. See, pattern आपके लिए important है for two things. First of all, strategy. That means आप preparation phase में है. If you know the pattern, you will be able to know कि which subject should be paid more attention. Alright, कि कितने marks के हैं उसके हिसाब से कितना attention देना है, कितना weightage उसको देना है. Then let's say you are appearing for exam, today is your examination and बहुत सारे आपके sections हैं. Which section should be attempted first, which followed by which section, then पहले merit section को करना है तो merit section है कौन से, non merit section है कौन से, because you will be getting a cumulative time. Alright, पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए you will get certain time and in that time you will have to judge कि which section should be paid more time or should be paid due weightage. Alright, उसका जितना weightage है merit section, अगर सारा का सारा time non merit section पे लगा दोगे तो merit section के लिए no time will be left and you will pay in that case. अगर non merit section में 100 में से let's say you scored 80 and merit section में आ रखे हैं 20, so you will not be able to crack examination. All right, so that is why it is very important कि pattern पता ही हो. So let us understand the pattern today. Not only know but also understand the pattern for NABARD examination. But before we move into that, I have a very quick announcement. So EduTap has recently launched an ultimate guidebook for all the NABARD aspirants. If you are somebody who is preparing for NABARD examination and have a set of queries regarding the NABARD organization, such as what does NABARD do, what is function of NABARD, role of NABARD, hierarchy in NABARD. So you will get the answer of all the queries regarding the NABARD organization in this one guidebook that you can see in your screen. Now let's say you know about the NABARD organization but you have no information on NABARD exam. Such as you don't know कि how many phases are there, what subject you should prepare, उन subjects की cut off, age relaxation. So you will get the definite answer of all the queries regarding you have the NABARD examination in the same guidebook. Now let's say you know about the exam, you know about the organization, but you don't have a strategy to start your preparation. Neither you know good sources. So this guidebook will help you with 6-step strategy as well as the definite sources that will help you crack your examination. Now guys, let me tell you, this guidebook is ultimate guidebook, one-stop guidebook for all the NABARD aspirants. Now why I am saying this? See, this guidebook is helping you get the definite answer. So that means it will help you save your time, save your effort, and you will have no confusion. Now that's time and effort you have saved could be used in your preparation and this will help you crack your exam. Now what you'll have to pay for this guidebook? So this ultimate guidebook is free for you all. What you'll have to do, you just will have to go in the description box, check out the link and register yourself to download this one-stop ultimate NABARD comprehensive guidebook. So this was about the guidebook. Now let us talk about the pattern for NABARD. So when we talk about the pattern, the first and foremost thing you should know is there are 3 phases in NABARD examination. That being phase 1, prelim phase. यहाँ out of 100 marks you will be getting your marks, alright, and cut off वहीं से बनेगी. Then you have phase 2. यहाँ 200 out of 200 marks you will attempt the paper and you will get the merit. Then interview you have, that is phase 3, worth 50 marks. So phase 1 prelims, phase 2 mains, then phase 3 interview you will have. So ये सबसे basic चीज that everybody should know. Now let's talk about phase 1 in detail. So here you can see you will have 8 subjects, that being reasoning, English, computer knowledge, quants, decision making, general awareness, economics and social issue, and ARD, that is agriculture and rural development. You will get 200 question, जिसमें से रीजनिंग 20 मार्क्स की होगी
और 20 क्वेश्चन होंगे. देन इंग्लिश 30 क्वेश्चन विल बी देयर वर्थ 30 मार्क्स. कंप्यूटर के लिए यू विल हैव 20 क्वेश्चन वर्थ 20 मार्क्स. क्वांट्स के लिए 20 क्वेश्चन वर्थ 20 मार्क्स. देन फॉर डिसीजन मेकिंग 10 question worth 10 marks. General awareness के लिए we will have 20 question worth 20 marks. And for both ESI and ARD we will have 40 question worth 40 marks. That will come out to be 100 marks. But मैम आपने तो पहले बोला था कि phase 1 will be out of 100 marks. Now what is that? See, when we talk about NABARD and when we especially talk about prelims paper, one thing you should know, there are two type of section, that is qualifying or non-merit section, and then we have merit section. So qualifying और non-merit section क्या है? So qualifying और non-merit section वो है जिनमें से you will have to clear the basic cutoff. Let's say for reasoning, out of 20 marks the cutoff is 5 marks. In that case, no matter if somebody got 6 marks or let's say 6.5 marks and somebody got 9.5 marks, both the candidate will clear the cutoff, that is sectional cutoff. Alright, ये हो चुकी है clear. In this case you don't need कि भाई 19 वाले की रैंक ऊपर होगी 6.5 वाले की नीचे होगी. There you'll only have to clear sectional cutoff. Alright. सिमिलरली यही केस फॉलो होगा इंग्लिश में भी, कंप्यूटर में भी, क्वांट्स में एंड डिसीजन मेकिंग. बट व्हेन आई टॉक अबाउट द लास्ट थ्री, दैट बीइंग जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी, यहाँ यू विल हैव टू क्लियर सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज यू विल हैव टू क्लियर द मेरिट. इनमें जो आपके मार्क्स आएंगे दे विल बी कैलकुलेटेड फॉर द मेरिट. नाउ व्हाट डज दिस मीन? Let's say in 1 year what happened, out of 20 the cutoff for general awareness is your let's say 4 marks. Then for ESI this is 10 marks, and for ARD let's say is 7 marks. The overall for merit you will have to score 52 marks. In that case, let's say in general awareness you scored 14 marks. All right, in economic and social issue, let's say you got 40 marks, and in ARD you got 5 marks. All right, so if I calculate your total, that will be your 59 marks. 52 thi cut off, but you will still not be able to clear phase 1. Why? Because although merit se zyada marks hai, you haven't cleared the cut off of ARD, that is 7 marks. You will have to at least score 7 marks here, then only you will be able to clear the cutoff. So that is why हमारा focus रहना चाहिए in 3 subjects में, that is general awareness, ESI and ARD. Here we'll have to clear the merit and we'll also have to clear the sectional cutoff. All right. इसके अलावा if I talk about the ESI and ARD, these are the main focus and you should absolutely start your preparation with from here. Now why I am saying this, there are basically 2 reasons. One I'll discuss here, one I'll discuss when I'll discuss phase 2. So here, see, out of 100 marks ki, when we are talking about out of 100 you will be getting the merit, 80 marks only come from 40 ARD and 40 ESI. So that is why these 2 subjects are very important. And also see, when I talk about the ESI, the syllabus thoda sa aapka defined ho jata hai. Why? You will be getting the economic issues, economic factors or economy you will get, and also got the social issues in India, especially in the rural India. So थोड़ा सा हमें पता है कि क्या क्या चीजें आ जाएंगी. When I talk about the ARD, we have agriculture, then we have the schemes related to the rural development. So ये दो चीजें हमें prepare करनी पड़ेगी when I talk about ARD section. If I talk about general awareness, it become a wide. All right, इसमें static है जो already चीजें existing है. Then you have current
ऑलराइट, जितनी अभी प्राइज एंड ऑल जितने भी मिल रखे हैं, द गेम वी हैव वॉन, एमओयूज जितने साइन हो रखे हैं, सो जनरल अवेयरनेस बिकम अ वेरी वाइड, बिकॉज देयर वी कैन नॉट बी लाइक कि ओनली दिस विल कम, दिस विल नॉट कम, एनीथिंग कैन कम, बट ईएसआई एंड एआरडी स्टिल थोड़े से डिफाइंड हो जाते हैं comparing to the general awareness. So this was the first reason, because ESI ARD worth the 80 marks out of 100 when we talk about. So for first 5 you will have to only clear again the sectional cutoff, and for last 3 you will have to clear the merit and the sectional cutoff both. एक ही नहीं, दोनों चीजें क्लियर करनी है. सो आई होप फेज 1 की हमें क्लैरिटी हो चुकी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेज 2. So when I talk about phase 2, there will be 2 paper. Paper 1 will be related to English. Paper 1 will be related to English. Paper 2 will be related to ESI and ARD. So let us talk about paper 1 first of all. So paper 1 और the mains की जो English है, how it is different from the pre की English और phase 1 की English. See, pre में सबसे पहले तो you will only get the basic English के objective question. Each question will be worth 1 marks. So, and it is also what it is non-merit or qualifying in nature hai. Alright, so these two are here. But when I talk about phase 2, here the English is descriptive. That means you will get the question in form of essay, then you will get précis, then you will get letter. Alright, so you will be getting the question out of these. In the way you will have to type the answer. So it is very important that you have a good typing speed so that you will be able to type your answer under 90 minutes. Word limit को भी match करना है. Out of 100 you will be getting the score. Now when I talk about, इसके बाद एक break होगा, then you will enter and paper 2 will start here, ESI and ARD का. First of all you will be getting the objective. So objective में 30 question will be there worth 50 marks. Now how it will happen? See here, what will happen? You will get 30 minutes and there will be 2 marker and 1 marker question. Alright, कुछ question जो होंगे worth 2 marks होंगे, कुछ question worth 1 marks होंगे. Alright, so here if you are getting 15 question, they will be worth 30 marks. Here you will be getting 20 question, they will be worth 20 marks. Out it will be 50 marks for you. Alright, so यहाँ 15 question जिनकी weightage कितना होगा, each question will be worth 2 marks. यहाँ 20 क्वेश्चन वर्थ 1 मार्क्स. सो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव यहाँ डिफरेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेटेज बढ़ जाता है ऑफ 15 क्वेश्चन. ऑलराइट, the second you will get the descriptive type. Here six question will be asked. There 4 question you will have to attempt. इनमें से 2 होंगे 15 मार्कर और 2 होंगे 10 मार्कर. Of course जो 15 मार्कर होंगे they will be a little difficult compared to the 10 marker. You will get 90 minute. And if you think कि यहाँ से मैंने 20 मिनट बचा लिए एंड यहाँ कंज्यूम कर लूंगा, नो, दिस विल नॉट हैपन. हियर ऑब्जेक्टिव के लिए यू विल गेट अ सेपरेट टाइम, डिस्क्रिप्टिव के लिए यू विल गेट द सेपरेट टाइम. Again, if you have good typing speed, this will also help you here. And guys, remember when we were discussing phase 1, I told you कि ESI and ARD are important for 2 reasons. First of all, phase 1 के लिए they worth 80 marks. The second are in the paper 2 they are worth 100 marks and they are getting repeated here. So syllabus will remain same. So if you prepared your ESI and ARD well one time, it will help you crack both phase 1 examination as well as phase 2 examination. That is why यहाँ वेटेज देना है. सो इफ यू नो द पैटर्न, अगर किसी को पैटर्न नहीं पता, उसे ये भी नहीं पता होगा कि ESI एंड ARD हैव टू बी प्रिपेयर वेल. वो क्वांट्स, रीजनिंग इन सब में ध्यान देगा, बट यू विल नीड टू हैव अ क्लियर आइडिया कि ESI एंड ARD फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इस पर काम करना है. ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट पेपर 2. सो वन मोर थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फेज 1 में भी आ रहे हैं, फेज 2 में भी आ रहे हैं, सो क्या इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है? आई हैव सीन मैनी कैंडिडेट जो वहाँ बैठे होते हैं, स्क्रीन है आगे, देन दे स्टार्ट आस्किंग कि नेगेटिव मार्किंग है, दे आर आस्किंग इन्विजिलेटर. You shouldn't be one of those people. All right, so I will tell you right here, जो negative marking है that will be 1/4. That means जो 1 marker question है, जो कि phase 1
और फेज 2 दोनों में होते हैं, दैट मीन्स प्री और मेंस दोनों में होते हैं, यहाँ इफ यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन रॉन्ग यू विल एक्स्ट्रा 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड. इफ वी टॉक अबाउट 2 मार्कर जो कि फेज 2 या मेंस में होते हैं, हेयर 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड इफ यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन रॉन्ग. ऑलराइट, इसीलिए तुक्के नहीं मारने हैं. इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द क्वेश्चन इट इज बेटर यू लीव, बिकॉज 0.5 मार्क्स जाएगा इफ आई टॉक अबाउट द 2 मार्कर. ऑलराइट, सो दिस वॉज अबाउट फेज 1, फेज 2, नेगेटिव मार्किंग, अटेम्प्ट कैसे करना है. आई होप यू विल बी एबल टू फॉर्मुलेट योर स्ट्रैटेजी वेल डिपेंडिंग ऑन द वेटेज. Okay, depending on the pattern that we have discussed. Now let us talk about the interview. So interview will be worth the 50 marks. All right, सबका होने वाला है, नो मैटर कौन से जर्नलिस्ट की पोस्ट से, स्पेशलिस्ट की पोस्ट से, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा. नाउ जो मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट जो बनती है, उसमें किस किस फेज के मार्क्स जुड़ते हैं. क्या सिर्फ इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू फेज 2 होता है, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू होता है, कौन कौन से फेजेस होते हैं. सो लेट मी टेल यू, व्हेन आई टॉक अबाउट द फाइनल मेरिट, यहाँ फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं. दैट मीन्स फेज 2 में से आउट ऑफ 200 हाउ मच यू हैव स्कोर्ड, और इंटरव्यू में आउट ऑफ 50 हाउ मच यू हैव स्कोर्ड. सो टोटल आउट ऑफ 250 आपके मार्क्स निकलते हैं. एंड इफ यू आर एबल टू क्लियर द कट ऑफ, so you will get the call or you will not. all right, but फेज 2 में इसीलिए हमने अच्छे से मेहनत करनी है, बिकॉज वो 200 मार्क्स है एंड 50 मार्क्स है, एंड फाइनल मेरिट में भी फेज 2 के मार्क्स जुड़ते हैं. सो सी, दो चीजें हमें पैटर्न से पता चल गई है. एक तो सब्जेक्ट में मेरिट नॉन मेरिट सेक्शन कौन से है, किसको कितना वेटेज देना है. देन फेज 2, ईच फेज में से भी सबसे ज्यादा वेटेज कौन से फेज को देना है. सो इफ यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न, सो तभी आप लोग ये कर पाएंगे. ऑलराइट, तो स्ट्रैटेजी इसी लाइन के अलॉन्ग रखनी है. अगेन फेज 2 हमारा इंपॉर्टेंट है. इफ आई टॉक अबाउट सब्जेक्ट, ESI ARD बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस वाज अबाउट दिस स्ट्रैटेजी. आई होप, नॉट स्ट्रैटेजी, पैटर्न, आई होप वी आर एबल टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है पैटर्न को. विल नॉट ओनली हैव टू नो द पैटर्न, विल हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न. सो आई होप यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग नाउ कि कैसे हमने स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या पैटर्न होता है नाबार्ड का. सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो. इफ यू स्टिल फील लाइक यू स्टिल हैव सम डाउट, नहीं समझ में आई कोई चीज, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू फील लाइक दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू इन एनी वे, डू लेट मी नो दैट in the comment section too. If you are new here, do remember to subscribe to our YouTube channel, and in our channel we also upload the content related to various regulatory body examination. You want the PDF of those subjects or PDF of those videos, you can join our Telegram channel as well. So thank you so much for attending the lecture. If you have any queries regarding any regulatory body examination, you can contact to us, you can write to us, you can also check our website. So thank you so much.